AAP national convener Arvind Kejriwal has accused BJP of tampering with voters' list in Delhi, calling it part of its Operation Lotus. The former CM alleged that there was an unusual increase in voter list modifications, including both removal and addition, especially in New Delhi. He has also submitted a letter to the district election officer on the matter. Kejriwal alleged that over 5,000 voter names were deleted and 7,500 fake names were added in just 15 days. Let's in fact listen into what he said. बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो। बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहां लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, मैं अब वो अमानतुल्ला खान है या कौन से उनके विधायक, उन्होंने कहा कि वो उनको हर 10,000 रुपये महीने भी देते हैं, सेटल भी करते हैं। आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है और ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं उनको ये सेटल करा के उनकी वोटें बनवाई हैं। अगर वो वोटें अब कटवाएंगे, मैं तो कहता हूं हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए केजरीवाल जी को पता नहीं होता, आज कुछ बोलते हैं, जब झूठ पकड़ा जाता है उनका फिर एकदम पलट जाता है। देखिए, पहले वो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर को इलीगल बनाने में इतने आसान नहीं होता। आप झूठे वूठे कार्ड कूड बनवा लो, कितने बनवा लोगे? अब ये पकड़े जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो इसलिए केजरीवाल इज ऑन द बैक फुट। We have with us my colleague Mehndi Garg joining us on the telecast. Mehndi, we're seeing that there's a Kejriwal has alleged this voter manipulation, this row that has erupted, and now Bharatiya Janata Party has also slammed Aam Aadmi Party, and this comes just ahead of Delhi Assembly polls. Well, indeed, we are ahead of Delhi Assembly polls. The politics over several issues are erupting, and Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal has accused allegedly Bharatiya Janata Party of tampering with voters' list in Delhi, calling it part of its Operation Lotus. And also, the former CM alleged that there was an unusual increase in voter list modifications, including both removals and additions, specifically in New Delhi constituency. And also, Arvind Kejriwal submitted a letter to the district
election officer on the matter. And Arvind Kejriwal also allegedly accused that over 5,000 voter names were deleted and 7,500 fake names have been added in just 15 days. But right now, BJP is also targeting Aam Aadmi Party regarding all these issues, and BJP is allegedly accusing Kejriwal for, making a fake voter bank by, settling the Rohingyas and the Bangladeshis in the national capital. And on the issue of fake votes and also, Rohingyas and Bangladeshis, Aam Aadmi Party and BJP are in a political war of words as of now. But if we talk about Aam Aadmi Party, then various allegations have been and countering it by stating that the detection of Rohingya and Bangladeshi people as fake voters has scared Kejriwal, and also Aam Aadmi Party chief has claimed that how the total of 1.06 lakh voters in his constituency as a New Delhi constituency, meaning they are trying to delete 5% of the votes and add 7.5%. So this is the toll and the number that has been given by Arvind Kejriwal, but BJP is also very active as of now, and ahead of the assembly polls, these are the igniting issues both that Aam Aadmi Party and BJP are fighting over. Yes, Shreya. Mehendi, when you have also talked about this Rohingya issue that even Hardeep Singh Puri has talked about, when we talk about this, we have also seen in Delhi that a lot of verification drives, joint operations and surveys are being conducted to track down illegal Bangladeshi immigrants. So that also comes just ahead of the Delhi Assembly elections that are set to take place next year. Well, indeed, Riya, it has been cleared by the Bharatiya Janata Party that they will make a big issue out of the Rohingyas and the Bangladeshis that are living in the national capital, and they are, protesting again against Aam Aadmi Party, saying that Aam Aadmi Party is creating a fake voter bank by, settling these people, these infiltrators rather, in the national capital. And also Aam Aadmi Party is saying that there is a statistic data that these people are not being settled by the Aam Aadmi Party, but the war of words and the accusations are being put up by the Aam Aadmi Party also over the central government, that central government is, helping these Rohingyas and Bangladeshis to stay over. But Hardeep Singh Puri has also made a statement regarding this and mentioned that how this has been a voter bank of Arvind Kejriwal from the past very, years also. So yes, there is a war of words regarding this issue. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.